This conference is to celebrate one of the greatest works of the Mujaddid of Islam, Sayyidina aala hazrat Imam Ahmad Raza Fazil Barelvi radiyallahu ta'ala anhu, Kanzul Iman Sharif. I have heard leading ulama, including my asatiza, I have heard them with my ears. They've said, if aala hazrat radiyallahu ta'ala anhu wrote nothing else, no other book, only tarjama Kanzul Iman Sharif. If aala hazrat in his entire life only gave the world tarjama Kanzul Iman Sharif, this tarjama is sufficient to prove aala hazrat is the mujaddid of his century. Just this one tarjama. Ulama say about this tarjama, it is not wrong to say it is an ilhami tarjama. It is a iman afroz tarjama. It is a ba mahavara tarjama. And it is not only a tarjama, it is a tafsiri tarjama of the Quran Majid. Everybody has heard of one specialist of Rizviyat, Hazrat Allama Dr. Professor Masood Ahmad, Naqshbandi, Karachi, Lahore, Karachi, Pakistan. Some 40 years of his life he dedicated only to the works of aala hazrat. 40-50 years of his life he spent only studying the works of Imam Ahmad Raza. And then when it comes to Kanzul Iman Sharif, Dr. Professor Masood Ahmad Naqshbandi Sahib says, अजाइबाते दुनिया में से ये तर्जमा भी एक अजीब अजूबा है. It is a unique, it is like a miracle from the ajaibat of the dunya. Hazrat Qibla, Mufassir Quran, commanded I speak on the ta'zim of Allah and His Rasul in the light of tarjama Kanzul Iman Sharif. Time is of the essence. I am going to cite just a few verses, inshallah, to give us some idea of the beauty of this tarjama. When it comes to the honor and dignity of Allah Tabaraka wa Ta'ala, we find other mutarjameen, translators of the Quran. They have not done justice to the muqam of Allah Tabaraka wa Ta'ala. They have completely erred and wronged in the status of that Allah Ta'ala holds, alhamdulillah. For example, we have Surah Al-Imran, in which Allah Ta'ala states, وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ. Other translators, Fateh Muhammad Jalandhari translates, हालांकि अभी खुदा ने तुम में से जिहाद करने वालों को तो अच्छी तरह मालूम किया ही नहीं. Does this translation do justice to the maqam of Allah? अच्छी तरह मालूम किया ही नहीं. महमूद हसन देवबंदी ट्रांसलेट्स, और अभी तक मालूम नहीं किया अल्लाह ने जो लड़ने वाले हैं तुम में. अब्दुल माजिद दरियाबादी ट्रांसलेट्स, हालांकि अभी अल्लाह ने उन लोगों को तुम में से जाना ही नहीं जिन्होंने जिहाद किया. Think about this. And then when aala hazrat translates tafsiri tarjuma, aala hazrat says, और अभी अल्लाह ने तुम्हारे गाजियों का इम्तिहान न लिया. और अभी अल्लाह ने तुम्हारे गाजियों का इम्तिहान न लिया. See the difference between the translations. Other ayat of the Quran talking of the maqam of Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahu yastahzi'u bihim, Surah number 2, verse number 15. All these mutarjameen, Abdul Majid Daryabadi, Deputy Nazir Ahmad, Maududi and others, they have used the translation such as Allah unse ठट्ठा करता है. Allah unse ठट्ठा करता है. Allah unse हंसी करता है. Allah unse दिल लगी करता है. अल्लाह उन्हें बना रहा है. अल्लाह उनकी हंसी उड़ाता है. इंक्लूडिंग मिर्जा हैरत देहलवी, गैर मुकल्लिद वहीदुज़्ज़मान. These are their translations. Sir Sayyid Ahmad Khan, their translations. Likewise, summa stawa alal arsh, they translate, फिर कायम हुआ तख्त पर, फिर अर्श पर दराज हो गया. They are saying this about Allah. फिर अर्श पर दराज हो गया.
Another ayat of the Quran. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. They translate. But mazhabs, deviants translate. Allah ka muh, Allah ka muh, Allah ka rukh, Allah ka samna hai. Aala hazrat radiyallahu ta'ala anhu. The ihtiyat you find in his tarjama. Because these words cannot be truly translated in the Urdu language. So even a giant like Imam Ahmad Raza, instead of using any translation in Urdu, he simply translates Allah yastahzi'u bihim, Allah unse istihza farmata hai, जैसा कि उसकी शान के लायक है. And then he translates summa stawa ala arsh, फिर अर्श पर इस्तिवा फरमाया. No translation, he uses the same word from the Quran Majid. Then the ayat of the Quran, فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. तो तुम जिधर मुंह करो उधर वजहुल्लाह है. Ihtiyat in the court of the muqam of Allah tabarak wa ta'ala. Just two ayat regarding the muqam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Everybody knows this ayat by heart. Abdul Majid Daryabadi translates, और आपको बेखबर पाया सो रास्ता बताया. You are all ulama, mashallah, you're all learning or teaching. The awam, when the awam reads this translation, what's the meaning they get? That the Prophet ﷺ himself was lost, he was astray, he did not know right and wrong. Abdul Majid Daryabadi translates, आपको बेखबर पाया सो रास्ता बताया, और तुमको देखा कि राह हक की तलाश में भटकते भटकते फिर रहे हो, तो तुमको दीन इस्लाम का सीधा रास्ता दिखाया. अशर्र फेली थानवी ट्रांसलेट्स, और अल्लाह ताला ने आपको शरीयत से बेखबर पाया तो आपको शरीयत का रास्ता बताया. Then comes the translation of Imam Ishq Muhabbat, Ala Hazrat radiyallahu ta'ala, matchless tarjama, subhanallah. He translates, और तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी. तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी. And to support this translation we have the ayat of the Quran, ma dalla sahibukum wa ma ghawa. One last example before I finish. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. This surah Shura, 42nd surah, verse number 52. We Sunnis believe Anbiya are always in the state of Iman. हमेशा साहिबे ईमान होते अंबिया किराम. लेकिन तर्जमा देखें, अब्दुल माजिद दरियाबादी देवबंदी ट्रांसलेट्स, आपको ना ये खबर थी कि किताब क्या चीज है और ना ये कि ईमान क्या चीज है. बिफोर 40 आपको ना ये खबर थी कि किताब क्या चीज है और ना ये कि ईमान क्या चीज है. थानवी ट्रांसलेट्स, तुम नहीं जानते थे कि किताबुल्लाह क्या चीज है और न ये खबर थी कि ईमान का इंतहाई कमाल क्या चीज है. मौदूदी ट्रांसलेट्स, तुम्हें कुछ पता न था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है. दिस इज द प्रॉफिट अलैहिस्सलातु वस्सलाम. तुम्हें कुछ पता न था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है. एंड कंजुल ईमान शरीफ तर्जमा, आला हज़रत ट्रांसलेट्स, इससे पहले न तुम किताब जानते थे न अहकामे शरा की तफसील. इससे पहले न तुम किताब जानते थे न अहकामे शरा की. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द तर्जमा कंजुल ईमान शरीफ. एवरी तर्जमा दैट्स कम आफ्टर इट, every tarjama that's come after it is now more or less based on जी ahkam तफसील. इससे पहले ना तुम किताब जानते थे ना अहकाम शरा की तफसील. हाँ, यह आयत है, मा कुंता तदरी मल किताब वल ईमान. ये सूरह नंबर 42 वर्स नंबर 52. Every translation that has come after Kanzul Iman Sharif, alhamdulillah, is now based on the tarjama of Imam Ahmad Raza. This is the faiz of Ala Hazrat, inshallah, and it will continue until the day of judgment. Allah Ta'ala हम सबको Ala Hazrat की तालीमात पर आँख बंद करके without any hesitation, without any ifs and buts अमल करने की तौफीक अता फरमाए.